Hello and welcome back to this amazing masterclass and this amazing channel. Myself, Abhinav. And first of all, please let me know if I'm clearly visible and audible to you all. And then we'll start with this amazing masterclass of resume building. So, am I clearly visible and audible to you all? Just please tell how's the source for this class. Hi, Suman. Everyone, just a plus one in the chat. Just a plus one in the chat so that I can know that yeah, I'm clearly audible and visible. And then we will start. Hi, Prince. Hi, Suman. Hi, Deepu. Yeah, great, great. Hi, Ajay. Hi. So we have some 40 people in the live. So guys, first of all, please hit the like button so that we can know and we can mark your attendance. And then we will start with our this particular session of resume building masterclass. Hello, Tabisi. Hello, guys. Hello. So without any delay, let me first introduce Jwala. It's not introduce, just add because Jwala has already been in our channel from last some videos. So let me add Jwala. Hi Jwala, how are you? हेलो। अभी ना एक चीज था, इसका लिंक मुझे भी शेयर कर देना, मैं भी अपने इधर शेयर कर दूँ Sure. I'm जो sharing मैसेज it now. वगैरह। हाँ. So hi Jwala, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। जस्ट आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो लोग पहली बार देख रहे हैं, फॉर दोज बाय द वे मोस्ट ऑफ देम नो। एक सेकंड। हाँ जी। ये आपको पढ़ाया पूरा? क्या पूरा पढ़ा दिया? You can sit there and talk. हाँ, पूरा पढ़ा दिया। समझा ये? Good evening guys, good evening. Let's start with today's master class. So today our focus will be on resume building tips. So this is not a resume review session. We will organize some resume review sessions too, but this is going to be the resume building tip session. Okay, this is going to be resume building tip session.
for this particular day, and then we will start with some resume building sessions too in future. That's a different case. This is our resume building tips, and we will start with that today in this particular live. Okay, so first of all, guys, please share this particular video with have to do it. Nice. Exam time your friends, okay, in your college group and everything, and we will start in just 2 minutes. Okay, we will be starting in just 2 minutes. Yeah. First of all 34 of you, just write your name, college name, and in which year you are in a chat box. Your name, college name, and in which year you are. Please write that on a and अच्छी बात है क्या बोलेगा कुछ बोल रहे हैं आपको पता है नहीं मुझे स्टोरी नहीं सुनना है आज मुझे आप लोग को 9 बजे नहीं छोड़ना है टाइम पे छोड़ना है पढ़ो ये सारा yeah, हाँ Sure. क्या पढ़ा yeah, Jwala. Okay. So let's start. I think. Okay. So guys, one second ना. ज्वाइन हो गए लोग बहुत अच्छे हैं, बराबर से. छोड़ो रोहित मीटिंग चल रहा है मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ. जी है ना सामने ये कौन सा भाषा लिखा Hey, hi, hello everyone. So let me first introduce Jwala for you all, guys. Hi, Aditya. So Jwala is studying SDE intern at JP Morgan UK, and he's also an educator at CoachSafe, and he's doing this mentoring thing and SD thing from last some months. So, and today we'll be having like knowing the crack to like the tips to crack that international offer, how we crack the international offer. That is something which is required, and we are going to cover that thing in this particular live. So, hi Jwala, over to you. Hi, hello everyone. So I have so गुड इवनिंग, सब बढ़िया होंगे ना. सो आज का जो सेशन है स्पेशली अभिनव ने रखा है, बोला था कि रेज्यूमे टिप्स सेशन है बेसिकली, कि रेज्यूमे कैसा बिल्ड करना चाहिए जो जनरली जिस पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है जिस रेज्यूमे की सिलेक्ट होने की. ठीक है. सो बेसिकली आज उस पर ज़्यादा अपना चर्चा करेंगे, उस पर अपना मेन फोकस रहेगा. ठीक है, ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लूँगा. ठीक है, वी विल गो पॉइंट वाइज. मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं अच्छे खासे Sure. जो अपने को मेंशन करने होंगे यहाँ पे. ठीक है. सो गाइज, आई होप सो यू ऑल विल बी रेडी टुडे, राइट है ना? सब तैयार? सो इंग्लिश टॉक. ओके, सो लेट्स टॉक ऑन इंग्लिश. चलो कोई बात नहीं ना. So guys, I Yeah. hope so you all will be ready, and today we are gonna work on how we should make our resume so that it gets selected for further processes, maybe online assessment or interviews. You know? Okay, so hey, happiness. Okay, okay. The people are joining like they are getting the notifications quite late, so people are still joining. By the way, तो we can start. I think now. okay, sure. Let's start. Sure. Yeah. So guys, as you all know that for getting selected we have to make a resume first of all, and where we have to apply first of all. That's the most important part. So the major part over here is that how your resume should be aligned. What are the various things that your resume should consist? Okay, and what are the most important things, right? That that thing I'm gonna explain you basically. Okay, there are many videos on YouTube and all the platforms. You can watch them also. They are also very great. But today you can also ask, and if any of the problems over there is that accordingly we can do a live doubt solving too. Okay. Okay. So let's start. So guys, I won't waste much time. So as you all know that every job has some other job description, right? What are their requirements, right? So the most important part of making a resume is that your resume should be specifically your um job description specification. Okay, over there, whatever the requirements are there, that should be mentioned in your resume always. Okay. Okay, other than also would work, but that should, are you getting? That's exclusive. You should mention always what is the job description, where are you applying,
that should always be over there, because the humans really don't check first of all the resume. It's just a sort of a machines or computer who checks. So basically they find for few of the keywords. Okay, what keywords would be, what they have been written in their job description. Okay, keywords would be what whatever they have would be written in their job description. That keywords the machine or the algorithm would be searching, is that keywords are present in the resume or not. Basically the important thinking is that the recruiter see whether that person is having the required skill or not, first of all. Okay, so in many cases what happens when we apply in all the jobs with the same resume, so what happens, let's say in first in one of the application, it requires some of the other, in the second application it requires some or the other. Okay, job description or the requirements. So basically it doesn't fulfill the condition of that machine, right? So basically it rejects. Okay, so in that case what happens, you don't even get the link of the online assessment, right? So that's the most important thing. Many thing, what happens, people are very really smart in their competitive programming development, but they really don't know how to align their resume, how to put things into their resume. So that's the most important part. Okay, okay. So what are the three most important parts of an resume? That the resume should be concise, it should look clean and clear. Okay, clean and clear, and it should be all consistent. Okay, means there should be some order. Okay, in your resume. So these are the most important point. As you can see, search this on internet also, you would get over there. Okay, so that's the most important point, that the resume should always be clean, concise, and consistent. Okay, that's the most important point of any of the resume. That no one wants a very flashy resume, right? Lots of pictures and all colorful resume. They first of all they get reject first of all. Okay, those types of resume gets reject first of all. Okay, so that's the thing, that your resume should not be very flashy or some coloring resume, some pics resume, especially for that this part. For the SD roles I'm talking about. I don't know about other roles such as graphic roles, वगैरह. They would be maybe requiring, but for the SD roles, as I think many of the 90% of the people are looking for the SD roles over here too. As Exactly. they're in the Yeah. BTech, so we would be mostly looking for the SD roles. Okay. So the most important part is that your resume should be clear. Okay, not lots of very fancy words, or let's say English jargons. They don't need that. Okay, it just should be very concise, such that whatever is the requirement, it should be mentioned. Okay, because the recruiter doesn't aim and it doesn't judge you entirely on the basis of the resume, because I think that uh, judging only on the basis of resume won't be the part, right? Because there would be many stages where the candidate would be judged. Okay, further. Okay, but the thing is that they need to get such people who are very concise, consistent, clean and clear in their part, because that show how much inclined you are towards their job, right? How much inclined you are towards their job, that's the most important part. As they also know that ki, it doesn't matter ki if they had written this or that, or everyone is always inclined to some other job, right? It's not that, I know that everyone wants a job. Okay, so in SDE field, so but they see how much you are inclined towards their job, and is the job descriptions, whatever they have mentioned, is matching in their resume, in your skill or not. Okay, so that's the thing. So these are the most important points, that your resume should always should, it should consist. Okay, okay. So Yeah. now what's the Exactly. next point? Okay, the next point Yeah. would be the resume. I just wanted to just have a conclusion of this, like the sum up of whatever you are saying, Jwala, and also in Hindi for the Hindi audience. कि देखो बेसिक ये बोलने का मतलब है पहला वाला कि आपका जो रेज्यूमे होगा वो आपके जॉब के अकॉर्डिंग होना चाहिए. व्हाट पीपल डू इज कि अगर आपकी जॉब एसडी की है और आप रेज्यूमे में लिख रहे हो कि आपने कहीं पे कैंपस एम्बेसडर या मार्केटिंग इंटर्न का काम किया हुआ है, तो वो काम नहीं आने वाला है. इफ योर जॉब, लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर अ एसडी रोल, ओके, एंड योर रेज्यूमे कंसिस्ट दैट you have worked as a campus ambassador or as a marketing intern, it is fine, you can write in position of responsibility, but in experience field it's not required. ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो. if you don't have any experience, आप वहां पे लिखने के लिए लिख सकते हो कि मैंने एज अ कैंपस एम्बेसडर काम किया, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ना, वो उससे रिलेटेबल नहीं है क्योंकि यू आर अप्लाइंग फॉर एसडी जॉब. एंड सिमिलर अगेन द सेकंड थिंग इज कि द रेज्यूमे शुड बी क्लियर. अगर आप उसमें फोटो लगा दोगे, आपकी फोटो देख के कोई जॉब नहीं देने वाला है. गेटिंग? या फिर
बाकी आप उसको बहुत सजा दोगे तो कोई नहीं देखने वाला है, बिकॉज वो रिज्यूमर्स को कुछ एक मशीन या सॉफ्टवेयर उसको देखते हैं और उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। गेटिंग? नो वन इज गोइंग टू सी दैट रेज्यूमे डायरेक्टली, अगर बड़ी कंपनी की बात करें। ठीक है, सो दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको थोड़ा कंसाइज, क्लियर एंड कंसिस्टेंट बनाना चाहिए। अभी आई विल शेयर, लाइक आफ्टर सम 10 minutes I will share my resume to you all कि वह कैसा है, and then we both will give you the reviews on that. Okay, great. Yeah, Jwala, you are mute, you are mute. Yeah, yeah, Sorry. So I think we are done with this point. The next point would be that your resume should not be more than your one page, right? So okay. So why this, right? So basically, what happens when the recruiter see the resume, most of the time, what it happens, the second part is skipped. Okay, the second part is skipped. Okay, so many people, what they do, they make a two-page, three-page resume. Okay, I had also made in my first time. That's why I'm saying so, because I was not knowing much, but it's okay. So the resume should always be of only of one page, not more than one page. Okay, if you have 10 skills or 10 projects, let's say, so short down what are the best two or three projects out of them, okay, to put, such that a resume look should short, concise, okay, not more than one page. If it is greater than one page, that's create a bad impression in front of the recruiter, okay, that always creates a bad impression on the front of the recruiter. It doesn't matter in which company you are working, as you can ask to any of the employee from biggest of the biggest companies, they will always say you to make a resume of one page only. Okay, so that's the case. If you are trying to put lots of information, again the information, again the thing I said in the earlier points, that it should be clean, clear and concise. So that would be a bad thing or bad impression towards the recruiter. Okay, that doesn't show how much responsible you are towards your work, right? Because I may have 10 skills, but I won't be a master of those 10 skills, right? I would be having some excellence in one or two skills, right? So you should mention those things over there, okay? You should mention those things such that if I will try to mention everything, of course my resume will be of more than one page. Okay, anyone. Okay, exactly. so that's the thing. I will always say that don't go. Take a simple template or try to make a simple Word document resume. So that would be more than enough. And I will also share my resume template with you in the channel link. Okay, so from there you can go and make a resume with that template and you can edit over there of according to You your can use, resume. I think, overleaf.com is best, I think. Yeah. हाँ, तो मैं अपने ही टेम्पलेट शेयर कर दूँगा ना, उसमें वो एडिट कर So लेंगे अगर जिसको वो हाँ यूज़ हाँ, करना है तो। और मैं अभी बेटर। अभी एट 7:30 मैं अपना रिज्यूमे में आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो अब एक और पॉइंट है कि हम जब रेज़्यूमे मैं अपना शेयर करता हूँ ना, तब मैं उसमें बताता जाता हूँ। अभी शेयर कर दूँ इसको? श्योर, हाँ शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। शेयर स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस 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 यस। ओके, सो गाइस दिस थोड़ा इज़ माय जूम कर दो, बस थोड़ा जूम कर दो। हाँ, हाँ, ओके, ध्यान से देखना। हेलो, हेलो, हेलो। या Okay, so guys, as you can see that their resume should always be of one page. As you can see that my resume is not more than of one page, and there should be a proper spacing and proper fonting, proper formatting, a proper font, a proper size, and the ink whatever you are using now, it should always be of a black color. And what are the major thing? It should be a bold. It should always be in the bold. So just see my resume, how I made it. I won't say it's the one of the best resume, but I think it is a good resume to get selected in any of the company. you have cracked international offer using this resume, so I think it is something which is really great. Maybe चलो कोई बात नहीं। Yeah, देखो, so guys just see it how I mentioned. So देखो, at starting as you can see that your name should always be at the first. Okay, your name should always be, and it should be in that bold format. Okay, because I think the recruiter should know your name too. Okay, and all of your connecting platforms links and number and email id should be at the top always. Always don't mention in somewhere between or at the last. It's not a leaflet or a travel leaflet or a poster, right? It's a resume. That means it's reflecting yourself. Okay, resume is
your reflection, right? That's the thing I try to understand. Okay, so you first of all try to write the contact information about you, your name, and your various platforms, such as your GitHub account, your LinkedIn account, or whatever the platforms you want to share, you can share over there, right? Okay. Okay, so now let's move forward. Okay, so the next point is that you how I have divided my resume. As you can see, the first part my resume is about me. Okay, about my information. The second part is my education. So let's say how many parts now, till there are two parts. First about me, then my education, third is my experience, fourth is my projects, fifth is my technical skills, sixth is my achievements, and seventh is my leadership skills. As you can see that my resume is being divided into seven parts, so you have to Exactly. divide अच्छा your resume. ओके ज्वाला हाँ. ज्वाला Hmm. फर्स्ट थिंग इज कि इसको थोड़ा और जूम कर दो सेकंड हाँ. थिंग इज रोहित कुमार इज आस्किंग दैट वाज दिस resume shortlisted प्लीज रिप्लाई हाँ भाई, शॉर्ट लिस्टेड यही हुआ था. this resume was shortlisted for JP Morgan United Kingdom International okay so it was shortlisted for the international offer so for those who um don't know this is that कोड same शेफ resume कोड शेफ के लिए भी यही शॉर्ट लिस्ट हुआ था. कोटसेफ के लिए भी यही शॉर्टेस्ट हुआ था जेपी मॉर्गन यूके में भी यही शॉर्टेस्ट हुआ था यूके तक गया हुआ है ठीक है बड़ा स्टैंडर्ड है ये रेज्यूमे, है ना? वहाँ पे कुछ फैंसी चीजें या तुम्हें डालनी नहीं है. यू कैन कंटिन्यू अब देखो, why I've said that you should use this type of resume templates, because it's very simple to read, right? Very simple. Anyone can understand this resume, whatever I have tried to mention. Okay, they don't have to look anywhere else in the resume, whatever they are looking for, right? It's simple, short, concise, and clear resume. See how I divided this resume in various parts. First of all is education, then it's experience, then it's projects, whatever I have, the projects I have done, and it's technical skills, whatever the technical skills, what are the various achievements I have having, I have not updated. Okay. And what are the leadership skills, that means what extracurricular you have been participating in your college, are you in some of the committees, you should mention this, because I'm again saying that when you are going into interview, you won't only be questioned on your technical skills. The questions will also lie on your behavioral, okay, on various leadership skills. Okay, I don't know about the various startups, but if you are going for some big MNCs or PVCs, you will always be asked questions on your leadership skills, where you have been participated, were you been in the part of some of the other committees, and took in charge of that project or in charge of that event, something. So that's very much important. Okay, so see, first of all, I have mentioned my education, and how your education should be. Your education should always be on the chronological order. That means the recent education should always be on the top. Okay, I'm not mentioned my 12th wala grade. Okay, but if you want to mention, you can to mention. If you don't want to mention, it doesn't matter. Okay, so whatever is your recent education, or whatever you are pursuing the recent, it should be on the top in the education part. Okay. Okay, and it should always, try to try to try to part your resume in these thing in this way. Okay, so let's move. So as you can see how I did, I first of all I mentioned my college name, that is Tagore College of Engineering and Technology, in a bold. So because I mentioned bold, because it may create some good impression in front of the recruiter if he or she knows my college. Okay, it's not a very big part, but it will create. Okay, it will create if he or she knows my college. So basically, okay. So let's see. Now I mentioned BTech in Artificial Intelligence and Machine Learning. Okay, and I've also mentioned my CPI or CGPA, that's 9.33, because it's important. Okay, let's say I would have mentioned 10, so it would have created a good impression. Yeah, it's his academic, or her academics are strong, right? Okay, and I have also mentioned till when my this is CGPA, because now I'm right now pursuing, right? I'm not completed. I've also mentioned my college year, that is July 2022, May 2024, because it may happen that the resume, the recruiter don't know in which year you are pursuing. Okay, so that's the thing you should always mention till when you are completing it. Now let's go to the experience part. So what happens in many people, uh, they won't having a good experience. So basically I was having an experience of already working in a good startup upgrade. I was over there as a software engineer intern. So first of all, in experience part, you have to mention something in bold like this about your
name of the company, and what was your role. Okay, see how I parted it. And after that, you have to mention what are the various things you have been worked over there. Okay, see, I have worked on various developing RESTful APIs using Node.js and maintain a platform design. I've also improved some front end and fixed logs console error. Work on the regex part and a new React component for the page. This was my work during my 3 months of internship period over there. So I mentioned everything over there, and I've also mentioned from when to when. Okay, because they need to know how much experience I have. So that was the thing. Okay. Okay. The next, see, I have mentioned about I'm still working as a code chef intern. Okay. From Feb, it's around 1 year right now. Okay. So what was my role? My role over there is making video editorials for contest, and I have also took lectures, DSA lectures for their camps. So this way your experience should really look like. Okay, what are the important points should be always in bold. Okay, you should mention your time period, because this will show your experience. Okay, that he or she has worked around 6 months, that means he have a 6 months of experience. Okay, what are the projects? Okay, so I would say that guys, try to mention 2 to 3 projects only, don't go beyond that. Okay, don't go beyond that, never. Never. I mean, of course, no need. There is no need of mentioning more than 2 to 3 projects. I have also mentioned. I have mentioned 3 projects, but I think if I would have mentioned if only 2 projects, that would have also worked. Okay, so try to mention only 2 to 3 project, at worst case 3 project. Okay, at the max. Don't go beyond that, never. Because I think whatever you would have done, it the best would be your one of the 2 or 2 3 projects, right? So you should mention that. So how I we one should mention this project. First of all, name of your project. Okay, then the link of the code. See, I have been linked over there, and the website, whatever you have mentioned. So you should link that and your website too, because the recruiter don't know that it really if he or she has made that or not. So you should always try to prove yourself, and you should mention the link over there always. Okay. Okay, so what I have done, you should mention of that. And at the last of every project, you should mention the tech stack you have used. Okay, so because this will create a good impression in front of the recruiter, because this will give an impression that he or she knows this tech stack. That means he have also worked in that tech stack, and he would having some proficiency over there. Okay. Okay. See, I have mentioned 2 to 3 projects. The same way I have always mentioned the code. If there is a website, I will also mention the website. Okay. So these are the 2 to 3 projects I have been mentioned over here, right? So I have always mentioned what was my how I worked over there, whom under I have worked, and what are the various tech stacks. So this is the important part, that you have to mention the tech stack you have been used, because this show how much he knows about the project. Okay, that is about project. These are the technical skills. Okay, so here comes the one of the most important part. So you have to change your technical skills accordingly to the requirement of the job always. Okay, to the requirement of the job, you have to change it. Okay, so basically what you can do, these are the technical skills which will be required in any of the jobs. So I have mentioned all of them, right? So this create a very diverse area. Okay, so how you can mention, I you can mention in most experience with and some experience. That means most experience come under where you always or daily work, and some experience means you have been worked with that, but you don't have much experience, or you won't have make a some great projects over there. So you can mention over there. So because it's a normal thing that everyone won't be a expert in all of the tech stacks, right? Of course, I know this tech stacks, C++, Python, React, Node.js, but I'm not very great in Django, Keras, CNN, right? Java. So, but you should mention that I have been experienced, or in a safe point, in a safe note, you should mention these points always, whether you know or don't know. But you can put those points in some experience. So let's say if the recruiter asks a question on these of the tech stack, so he or she would be relying that he don't have a much experience, and if you won't able to give that answer, so that won't create a very much bad impression over there. Okay. Okay, so next point, your achievements. Okay, what are your achievements? So various achievements such as your code hackathons, or Google coding rounds, or CP competition rounds. You can mention everything over there. First, how you can mention your achievements? Your achievement should be mentioned in a way such that the name of the competition,
the most important point is your ranks or uh, whatever the place you have been got, you should mention it properly, and the link of that too you can mention over there. At last, over there, it can be many of the things such that you can mention leadership skills at the last. Leadership skills, in under leadership skills, your all the co-curricular activities can come, okay, or the various things that you have been part of some of the committees or something. So this will create a very good impression. Okay, leadership skills are the important, because I have been asked questions on my leadership skills too, and the question was always from my resume only. The project question was always from my resume only, not beyond that. The question was asked from my these projects only. What are the various tech stacks I have been used and how they work? So you should always be know of your projects whichever you have been written in your resume in depth, okay, because the recruiter may ask you lots of question on your projects, okay, not beyond that, only on your resume. And 99% cases they only ask the questions based on your resume only, because they too know that you are to a human, right? You can't know everything. That's a normal process of thinking of anyone. If it's your bad day, then no one can help you, right? So Yeah, uh, I will share my resume template with you, and if you want, you can edit that and you can use over there. Okay. I'm not saying only you can use this only. There are many good resumes, but I think this had worked for me many places. So that's why I suggest this one to everyone. I have used this only. So because it looks very clear, right? यार कोई भी देखो ना, किसी को भी सब समझ जाएगा, नहीं समझ जैसा कुछ है ही exactly. नहीं. हाँ. So Exactly, that. exactly. That was obviously it was selected means it is something that is up and that is good. So you guys can Hmm. refer from this. Jwala, please इसको तुम अपने LinkedIn आईडी में डाल देना as a public link है इसका. I hope तुमने डाला होगा तो मैं तुम्हारी LinkedIn आईडी शेयर कर दूंगा so that people can get this resume, है ना? Like Hmm. मैंने अपने LinkedIn पे डाला हुआ है so that people can get. And I just also wanted to take like mine one like थोड़ा सा मेरा तुमसे अलग है. But it's like कि guys अलग अलग तरीके से हो सकते हैं. It's not like कि आपका same ही होगा. Okay, you can have different types of like different resumes and different types of resumes. So it's not like कि same होना चाहिए, but हाँ, there are some things that should be covered there. Guys, we will also have resume review session. Okay, आप लोगों के personal resume हम लोग लेके उसे review करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए ज्वाला प्लीज इसमें काफी डाउट्स थे ऊपर लोगों के तो तुम प्लीज उसको देख लो दैट व्हाट द डाउट्स आर देयर ना. आई थिंक दीपू ने शुरुआत किया था एंड देन वी हैव लॉट्स ऑफ डाउट्स. लेट मी ऐड वन बाय वन. दिस इज द फर्स्ट वन. Okay, so what about projects? SD role projects are different than data scientist project. So data scientist projects में basically तुम्हारे वो ML वाले जो projects होते हैं वही होते हैं. I guess I'm not wrong. मुझे जितना पता है ना, वही projects होते हैं. So एक project उसके डाल दो ना, तुम्हारा जो सबसे बेस्ट project है, और एक जो SD role वाला project है उसे डाल दो. तुमसे ये नहीं expect कर रहा होगा यार data scientist, तुम एज अ fresher जा रहे हो कि तुमने पूरा data science में फोड़ के रखा है. तुम्हें आता है ना, बस वो इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है. दैट्स द थिंग. सो यू कैन, इफ यू ऑफ कोर्स तुम्हें अगर डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो तुमने उसमें प्रोजेक्ट्स तो बनाए होंगे. सो यू शुड हैव मेंशन दोस प्रोजेक्ट्स टू ओवर देयर इन योर रिज्यूमे. सो दैट्स द थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. या रोल बेस्ड, ये नहीं नहीं, ये नहीं, ये कुछ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. रोल बेस्ड प्रोजेक्ट अभी तो यार ऐसे फिर तो हो गया, तुम बनाते पड़ गए सबके लिए. ऐसा नहीं होता. एग्जैक्टली. हाँ. रोल तो बेस्ड का मतलब था कि थोड़ा सा लाइक इफ यू आर टारगेटिंग एसडी. हाँ, एसडी में ग्राफिक डिजाइनिंग का तो ना एक्सपीरियंस इतना तो समझ लो ना. बस कंपनी बेस्ड नहीं, रोल बेस्ड तो करो ना एटलीस्ट. इफ यू आर फोकसिंग ऑन एसडी या डेवलपमेंट तो एटलीस्ट उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का या मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं डालना चाहिए. गेटिंग. इफ आई हैव लेस एक्सपीरियंस एंड मोर प्रोजेक्ट्स इज इट फाइन. देखो क्या होता है ना, लेस एक्सपीरियंस एंड मोर प्रोजेक्ट्स, तो तुम हैकेथॉन्स के एक्सपीरियंस डाल सकते हो, बट ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है पर्सनल प्रोजेक्ट, उसको तुम एक्सपीरियंस में नहीं डालो तो बेटर है. तुमने कोई हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया, उसका तुम डाल सकते हो, है ना. उसे तुम डाल सकते हो कि आई हैव वर्क अराउंड 36 आवर्स ड्यूरिंग अ रिज्यूमे, तो इसको तुम अपने एक्सपीरियंस में डाल सकते हो. बिकॉज बेसिकली हैकेथॉन क्या होता है, एक एक्सपीरियंस ही होता है ना, नॉर्मल एक एक्सपीरियंस होता है. सो यू कैन पुट दोज थिंग्स इन दिस. सो ट्राई टू डू सम ऑफ द इंटर्नशिप्स एंड बेसिक छोटे मोटे भी ट्राई करो. अनपेड भी चलता है ना, स्टार्टिंग में करे होते हैं बहुत लोग, तो इट रेज्यूमे में बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो तुमने जब डाला होता है वहाँ पे. सो आई एम फ्रॉम नॉन सीएस बैकग्राउंड, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट रेज्यूमे, प्रोजेक्ट और डीएसए प्रोफाइल फॉर प्लेसमेंट? देखो दोनों मैटर करता है, अब मैं बता रहा हूँ, दोनों मैटर करेगा.
देखो 2 प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए। अगर यार डीएसए प्रोफाइल मतलब तुम अगर तुम गेनेटिक रोटो बेचो तो अलग बात है भाई। सही बात है। देखो नॉर्मल सी बात है, मतलब देखो एसडी रोल के लिए जा रहे हो ना, तो वहां पे तुमको मैं प्रोजेक्ट पे ही काम करना है ना यार। सोचो ना यार, प्रोजेक्ट पे तुमको एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। देखो डीएसए इसलिए मांगते हैं कि सामने वाले की कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो उतना ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी है उसकी। जैसे उत्कर्ष गुप्ता तुम्हारा नाम है, इंडिया के टॉप कोडर का नाम भी उत्कर्ष गुप्ता ही है, तुम्हें पता होगा। वो मैं आईडी चेंज करके आ रहा हूँ मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर आप हो तो भैया सॉरी। सॉरी सॉरी, माफ कर दो। नहीं So, नहीं। कोई नहीं कोई नहीं। नहीं कलर चलेगा। फिर रिज्यूमे नहीं नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसा कलर फिर व्हाइट एंड रिज्यूमे ब्लैक करना पता हो है ना तो वैसे ही चलता है बस, उसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग नहीं। भूल जाओ, ग्राफिक डिजाइनिंग करो फिर। चलो ठीक है, अभी ये सारे घूम फिर के वही लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाकी फिर आते हैं हम लोग। ये दीपू का फिर से सेम क्वेश्चन है जैसे फॉर एसडी प्रोजेक्ट्स, उसको बाद में लेते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस ओए फॉर कंपनीज इज लोड को। हाँ देखो, अब देखो मैं बता रहा हूँ, अब ओए के लिए लीड कोड के कॉन्टेस्ट मेरे ख्याल से इनफ नहीं है, नहीं है। क्योंकि सीपी। ओए का लेवल बढ़ता जा रहा है, लिटरली मैंने देखा है बहुत हार्ड होते जा रहे हैं। मैं भी तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं मैंने खुद देखा है। ऑनलाइन असेसमेंट के लिए नहीं है तो उसके लिए सीपी करना पड़ता है, बट हाँ इंटरव्यूज के लिए लीड कोड के जो कॉन्टेस्ट है इनफ है, मोर देन इनफ है। बट ऑनलाइन असेसमेंट तो भैया नहीं क्रैक होती है भाई, लीड कोड से तो नहीं क्रैक होती है। मतलब अगर तुम्हारा नसीब है इजी आ गया तो अलग बात है, बट इजी आता नहीं है मोस्ट ऑफ द केस में। तो लेट कोड कॉन्टेस्ट वाले क्वेश्चन से उस लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि बेसिकली उन लोग ऑनलाइन असेसमेंट जानबूझ के हार्ड ही देते हैं। उन लोग को छांटना रहता है बच्चों को, मतलब दे हैव टू एग्जैक्टली, इतने स्प्रेड इट दस आउट। हजार में से 100 करने हाँ होते हैं, तो हाँ। उसके लिए उनको करना पड़ता अभी हैक विद है। इन्फी आई का आएगा थिंक तब समझ जाओगे। हैक पे भी कर लो, या फिर अभी कोडिकॉन आया था। तो आई हैव ये डिड जॉब इन बायजूस, हाँ बायजूस। कर सकते हो, डाल सकते हो, आई ये हैव तो अच्छा डिड ही है ना। I have did job in Byju's and SEO and WordPress. Is it right to mention? हाँ बहुत बढ़िया। जो जो भी टेक्निकल स्किल्स है ना उसको मेंशन करना चाहिए। तुमने ग्राफिक डिजाइनिंग भी की है उसे भी मेंशन करो, ऐसा नहीं कि नहीं मेंशन करना, यू शुड मेंशन, बट यू शुड आल्सो मेंशन वॉट एवर द रोल यू आर अप्लाइड फॉर, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली, वो उस पर ज्यादा फोकस रखो ना, वो जरूरी है अगर तुमने कहीं काम किया है कुछ। पर हाँ, अब मैंने देखा था एक बंदे ने उसमें लिखा था आईटी जेई क्रैक किया है रिज्यूमे में। वो कोई नहीं देखने वाला भाई, तूने आईटी जेई क्रैक किया कि नहीं किया है, दैट इज ठीक है, उसका अचीवमेंट डाल सकते हो। बट वो एक्सपीरियंस है, फिर उसमें मतलब नहीं रहना। तुम अब तुम एक्सपीरियंस में नहीं उसको एसडी, अचीवमेंट में डाल सकते हो। हाँ वो है। चलो फिर आई थिंक अभी बाकी क्वेश्चन बाद में लेते हैं। लेट मी फर्स्ट शेयर माय रिज्यूमे, एंड आफ्टर दैट हम लोग देखो लास्ट में डाउट क्वेश्चन रखते हैं, ओके। सभी सिमिलर है। हाँ, सो काफी सिमिलर आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी द रिज्यूमे दैट इज समथिंग सिमिलर, ओके, माइन वन। सो और फर्स्ट इसी ऑफ से ऑल यू लिंक्डइन कैन सी लगा है, गाइस, इसी से लिंक्डइन लगा है। इसी से लिंक्डइन जीएफ लगा है, सही बात है जीएफ इसलिए। जीएफजी भी। हाँ जी जी, तुम मेरा सेकंड ईयर में बहुत ही पुराना, तो मतलब ये सब कुछ कुछ भी नहीं था मेरे पास, तीनों में से कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं जीएफजी में। बस मैं यहाँ पे लिखता था यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो मतलब हाँ, जितनी मेरी, तुम लोग में लिंक्डइन देखना कि अगर मैं यहाँ बात करूँ लिंक्डइन में, तो मेरा काफी जगह सिलेक्ट हुआ, सारा यही वाला हुआ है। ठीक है, तो लाइक सबसे पहले तो देखो, नाम डाल दो, फोन नंबर, और बेसिक यार, मतलब यहाँ पे अब डोंट ऐड योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल हेयर, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम प्रोफाइल is not required here कि Instagram प्रोफाइल डाल दो। ओके, सो नॉर्मली आई कैन से कि GitHub and LinkedIn is like it's fine. People also add their code forces and code से profile here. By the way, I have my good code से profile. I can add, but मैंने नहीं add किया है because that is something that CP specific. तो मैंने जहाँ पे CP के बारे में बात किया वहाँ मैंने इसको add करके रखा हुआ है, ठीक है। Now if I will and this is guys, this is built using overleap.com. मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक अच्छी साइट है, ठीक है। Now after that guys, just like ज्वाला, मैंने भी यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस, एंड we will have we will have doubts at the last 10 minutes, okay. So for those who are having doubts, please just wait for 5 minutes. Let me first come to my resume, okay. So yeah, education की बात करें, so we have I have just mentioned कि हर code, but like HBTU कानपुर, my college name, उसका basic graduation, and then I have just written the CGPA, okay. After that I'm like कि my school name, and then the like school का कितना है, और intermediate science, स्कूल में कितने परसेंट है वो नहीं किसी को जानना है, no one is worried about that, okay. After that, like currently my top 3 experiences are at Xeon,
where I've done 6 months of internship. So ये थोड़ा सा भी पुराना है, तो like मैंने आज दिखा नहीं, but I now it is currently over. So it's of 6 month internship जो कि अभी recently दिसंबर में over हुई, ठीक है. And मैंने बताया कि मैंने वहाँ कैसे काम किया हुआ है. So I think 2-3 lines are good आपको बताने के लिए आपने कैसे काम किया हुआ है वहाँ पर, okay. After that I have written a Geeks for Geeks experience, जो कि अगर कोई बंदा like if some company is targeting on your DSA skills, this can be helpful for that. And बाकी the other two are you can see here software and front end. अगर आप लोग मेरी LinkedIn देखोगे ना, तो you can see बहुत सारी चीजें, मतलब काफी एक्सपीरियंस आपको दिख जाएगा. I don't know कि यहाँ से कुछ मेरा पर्सनल डेटा दिख रहा होगा, बट ठीक है मैं शेयर कर देता हूँ. तो you can see कि अगर तुम यहाँ से मेरा देखोगे ना, तो I have like 12 experience on my LinkedIn. तो पहला एक्सपीरियंस मेरा क्रैक डीएसए का, जो कि मैंने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है. गाइस तुम लोग चेक कर लो जाके वेबसाइट, तो तुम लोग चेक कर सकते हो events.crackdsa.com. दिस इज द वेबसाइट जो कल लॉन्च हुई है, और अभी एक दिन में ही इसके अंदर 1000 क्लिक्स आ चुके हैं. सो दैट इज समथिंग जो काफी अच्छा है. द सेकंड इज डीएसए मेंटर गिग्स फॉर गिग्स, जो मैंने ऐड करके रखा हुआ है. दैट इज व्हाट समथिंग आई हैव एडेड. ओके, आफ्टर दैट आई हैव लाइक Xeon, वो मैंने ऐड करके रखा हुआ है. No, I have not added YouTube because I don't think YouTube experience is relevant to SD jobs. Okay. Then I've done lots of like as a tech mentor at Function Up, Coding Spoons, Jwala, Technology, Needle School, CodeCef, Cody. 7-8 जगह I have. Okay. And then we have this like Sparkles. Okay. So basically I have 2 experience. Okay, I think वो visible ही नहीं है तुम लोग यार. Sorry. वो visible ही नहीं था तुम लोगों को experience. Sorry. मेरा लिंक्डइन ना. सो या यू कैन सी हियर कि मैंने ये सॉरी अब विजिबल होगा, ठीक है. यू कैन सी कि मैंने काफी कुछ ऐड करके रखा हुआ है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे. लाइक सबसे पहले मैंने क्रैक डीएसए का करा हुआ है, ठीक है. सो आई कैन ओपन माय क्रैक डीएसए साइट. यू कैन सी हियर कि अगेन वो विजिबल नहीं होगी, सो उसको तुम लोग देख सकते हो. मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है. आफ्टर दैट गिग्स फॉर गिग्स का है जो मैंने रिज्यूमे में डाला हुआ है. Then we have Xeon का एक्सपीरियंस. ओके, आफ्टर दैट वी हैव YouTube का एक्सपीरियंस जो मैंने नहीं डाला हुआ है. सो पहले जब मेरे पास कुछ था नहीं डालने को, that time I was writing like this, but now I don't write this YouTube experience. Okay, then we have technology, coding spoons, function up, Flixwala, Newton School. मैंने बहुत जगह काम किया है, CodeCef, Cody, but मैंने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है. सो इट्स लाइक कि इट्स फाइन. बट हाँ, जो मेरे 2 मेन एक्सपीरियंस हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्नशिप थी, एक स्पार्क प्लस और एक Xeon, वो मैंने ऐड किया हुआ है. यू कैन पुट CEO. नो, आई डोंट थिंक आई एम एलिजिबल फॉर राइटिंग CEO. आई एम नॉट दैट मच एलिजिबल कि मैं CEO बन जाऊं. तो बिल्डर, आई एम जस्ट बिल्डिंग अ वेबसाइट, दैट्स ऑल. आई एम बिल्डर. ओके, दैट्स ऑल. सो जस्ट अ मिनट, लेट्स कम बैक टू द रिज्यूमे. Yeah. So yeah, you can see these are experience. So as Jwala said कि अगर आपके पास 10-12 चीजें तो 10-12 नहीं लिखना है, टॉप के 3 experience is fine. Okay. Then we have some achievements. So like achievements में if like I am CP specific, मेरे सारे achievements सिर्फ CP से related हैं. कोई hackathon नहीं है. I have some hackathon. Like recently I have participated in Postman hackathon where I got top 15. So I have something to mention. But basic मैंने अपना जो achievements है वो पूरा CP specific करा हुआ है. कि I have a expert rating on code forces. I have 5-star on CodeCef. I am ICPC list. I have AIR of 10 in lunchtime. I have AIR of 8 in Google Start, and I have this rank in Code Forces. So basically, my complete achievements is CP specific. CP means competitive programming. Okay, but you can also add hackathon experience. Now, like for projects, you can see कि ये मेरा थोड़ा पुराना resume है, तो मैंने यहाँ पे notes.crackdsa जो मेरी साइट थी उसका दिया हुआ है. Now I can add here events.crackdsa also. और बाकी मैंने एक छोटा सा ऐप था React का, वो दिया हुआ है. And then at the last some technical skills. Okay, very basic. So like थोड़ा ज़्यादा complex नहीं करना तो resume को, जितना कम से कम आप लोग कर पाओ उतना ज़्यादा extra value add करता है, ठीक है. So let's have at the last कुछ थोड़े, मैं आपको link share कर दूंगा. By the way, link you will get on my LinkedIn profile. You can just visit my LinkedIn profile. आधा आपको public link मिल जाएगा resume का, आप लोग check कर सकते हो. मैंने रिज्यूमे ओवर लीप्स बनाया हुआ है, मैं टेम्पलेट शेयर नहीं कर सकता, सॉरी. मैं देखूंगा अगर हम लोग कॉपी कर सकते हैं, मैं शेयर भी करूंगा, ठीक है. और या तो लेट मी टेक सम डाउट्स स्टार्टिंग से. डीएसए पढ़ने से पहले कितनी जावा चाहिए प्लीज? थोड़ा बहुत कम चाहिए, ऑल इन वन. अगर आपको बेसिक्स आता है ना, बस 1 महीने बेसिक्स पढ़ लो और डीएसए शुरू कर लो, बहुत ही बेसिक, ठीक है. I did before Node.js have some certificates of internship of Python data science. इसको LinkedIn पे डालो.
इसको लिंक्डइन पे डाल सकते हो। लिंक्डइन पे डालो, बट सर्टिफिकेट्स लाइक आई डोंट थिंक एक्सपीरियंस में डालना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत डाल सकते हो, स्किल्स के सारे सर्टिफिकेट लगा दो, मतलब आई डोंट थिंक सर्टिफिकेट इतना मैटर करते हैं। उसको स्किल्स में डालना, सर्टिफिकेट नहीं, स्किल्स में सब डाल सकते हो, और लिंक्डइन पे तुम अपने रेज्यूम इसको डाल सकते हो, एग्जैक्टली, जहाँ उनका जो सर्टिफिकेट सेक्शन है उनका, उसमें डाल सकते हो लिंक्डइन पे। एग्जैक्टली। सर व्हाट अदर प्लेटफॉर्म्स वी कैन गो टू गेट एन इंटर्नशिप एज एन इंटर्न? इंटर्न तो यूज ही ना करो, क्यों सबसे ज्वाला? घटिया साइट। योर थॉट्स अबाउट इंटर्न? तुम लोग इंटर्न यूज कर रहे हो क्या यार? इंटर्न बिल्कुल नहीं यूज करो, अनइंस्टॉल द ऐप, वेबसाइट ना खोला करो। मैंने अब फर्स्ट ईयर के बाद से इंटर्न खोली नहीं है, मैंने फर्स्ट ईयर के बाद से इंटर्न नहीं खोली है, not required. Or I am looking for, so see, I am telling you 3 websites. Okay, the first one is LinkedIn. LinkedIn पे बहुत अच्छा है. Okay, the second is a website called Indeed. Indeed भी वो काफी अच्छा है. और third we can say AngelList. AngelList is another important or good we can say. Okay, so AngelList इसलिए good है क्योंकि वहां पर स्टार्टअप्स मिलेंगे, वहां पे आपको कोई बड़ी कंपनी नहीं मिलेगी, लाइक बेसिक स्टार्टअप्स है वहां पर. अब उसका नाम वेल फाउंड हो गया है. एंड सेकंड इज इंडीड. इंडीड में सारी तरीके की मिल जाती है, लाइक मेरे को जो स्पार्क प्लस की मिली थी वो इंडीड से मिली थी, और लिंक्डइन की मुझे कोडसेप से मिली थी, वो तो सॉरी लिंक्डइन कह रहा हूँ मैं, जियोन. जियोन मुझे कोडसेप से मिली थी. ठीक है, सो एक तो लिंक्डइन कर लो, लिंक्डइन इज बेस्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छी है. सेकंड इज इंडीड, थर्ड इज एंजलिस्ट, और भी कई सारी है, हाईरेक्ट है, हाईरिस्ट है, हाईरिस्ट.com कर लो, अभी उनका जीएफजी से कोलैब हुआ है, पर उसमें काफी अच्छी अच्छी है, तो मैं लिख देता हूँ नीचे. First one is high risk. Okay. After high risk, we can have LinkedIn. Then we can have Indeed, and after Indeed, we can have uh, वो Angelist and कुछ एक्स्ट्रा. So मैं इसको वहां भी लिख दूंगा. Yeah. So is it fine? Next one. रेज्यूमे में सर्टिफिकेट्स मेंशन करना ठीक नहीं है. क्यों ज्वाला? रेज्यूमे में सर्टिफिकेट्स देखो, सर्टिफिकेट्स मतलब जब तक तुमने वैसे वाले सर्टिफिकेट्स नहीं, जो AWS वाले होते हैं या GCP वाले होते हैं ना, अगर वो वाले हैं जो पेड पैसा देते हैं, उसका 8-10 हज़ार का टेस्ट होता है, तो उसको देने के बाद तुम्हें जो सर्टिफिकेट आते हैं उसकी वैल्यू बहुत होती है. ठीक है, बट जब तक वैसे वाले सर्टिफिकेट्स नहीं है तुम्हारे, ये नॉर्मल यूडेमी कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स, तो वो जीरो, उसका कुछ यूज नहीं है. उसको तुम लिंक्डइन पे डालो, वो बेस्ट है. और वहां नहीं डालना, वहां तुम वो सर्टिफिकेट डाल सकते हो जो तुम्हारा सर्टिफिकेशन होता है, जो GCP का होता है, गूगल क्लाउड वाला होता है, एक AWS वाला होता है. वो बहुत वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि वो उनका सर्टिफिकेशन पाना ही हार्ड होता है, उनका टेस्ट ही बहुत हार्ड होता है. वो सब अगर है तो यू कैन पुट दोस, बट ऐसा नॉर्मल जो सर्टिफिकेशन है, जो यूडेमी कोर्सेरा, वो सब वो जीरो वर्थ है, और डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबके पास होता है, मतलब नहीं हो सकता. अगर नेक्स्ट, and Tavisi, yes, you will get the recording. Okay, you will get the recording. सर आई रेड वेब डेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम कॉइनसेंट. पता नहीं मुझे कॉइनसेंट. अगर कुछ नया सीखा है साक्षी, नया सीखा है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, स्किल्स इंप्रूव हुई हैं, वो प्रोजेक्ट्स रिज्यूमे में डालो, वो स्किल्स पोस्ट करो लिंक्डइन पे. नहीं, वो नहीं कर रही हो, क्वेश्चन अगर स्किल डेवलप की है, दैट्स द मेन थिंग. वो पूछ रही है कि उधर से मैंने पढ़ा वो सही है कि नहीं है. मैंने पढ़ा, देखो पढ़ चुकी हो ना, तो वो मतलब पता होगा ना कि अगर कोई प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं या फिर स्किल्स इंप्रूव हुई हैं. आई थिंक आर यू आस्किंग कि तुम्हें लेना है कोर्स, फिर ले चुकी हो? नॉट गेटिंग ना. आई डिड, आई थिंक सो, उसने लिया है पहले से. सो अगर तुमने जस्ट लाइक कि उससे थोड़ा सा निकाल के प्रोजेक्ट्स बनाओ, चीजें करो, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल ना. तो naukri.com में यार इतना अच्छा मैं नहीं करता हूँ, मैं मानता नहीं उसको इतना अच्छा. आई एम इन थर्ड ईयर एंड नॉट स्टार्टेड DSA डेवलपमेंट. आई एम टू लेट. गोइंग टू स्टार्ट श्योर. इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड थोड़ा सा लक. क्यों ज्वाला? लक लक मैटर्स. लक तुम्हारा बस एक सीमा तक मैटर करता है ना. हाँ, एक सीमा तक. देखो मतलब मैं बताता हूँ. दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार, बट जब तुम 10वीं बार इंटरव्यू में बैठ रहा है ना, 50वीं बार, तब तुम्हारा वो लक नहीं है, तुम्हें तेरी मेहनत है, समझ जा. देखो मैं बताता हूँ. अब तुम सोच रहे हो कि तुमने आज तक लीड कोड का हार्ड नहीं सॉल्व किया है, या तुमने आज तक लीड कोड में सिर्फ 100 क्वेश्चंस लगाए हुए हैं,
और तुम सोचो तुम अपने लक के दम पे पहुंच जाओ किसी अच्छी कंपनी में, तो नहीं हो सकता ना। हाँ, अगर मान लो तुमने भाई लीड कोड में 500 क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, तुमने ओवरऑल से मिला इला के 1000-1500 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, मतलब तुमने सॉल्व बहुत किया है, तब लक आता है कि जो तुमसे पूछा जाए तुम्हारा सॉल्व करा हुआ आ जाए। क्योंकि अगर तुमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो एक लक भी काम कर जाएगा कि 1000 में से हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन फंस जाए तुम्हारा लगाया हुआ। पर जब तुमने क्वेश्चन ही 100 सॉल्व किए हैं तो प्रोबेबिलिटी वहीं पे कम होगी, तो उन 100 में से कितने आ सकता है उससे और प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो लक ने तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है। अगर तुमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उस 1000 में से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 100 किए हैं उससे आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ उतना जल्दी हो जाएगा, हो सब जाएगा, है ना। और ना यू हैव टू अप्लाई इन एज मेनी पॉसिबल कंपनीज। मेरा ईमेल आईडी देखोगे ना, उसमें इतने सारे कंपनीज का रिजेक्शन मेल दिखेगा तुम्हें कि आज ऐसी बैंड बज जाएगी उसको देख के। एक दिन दैट्स एक द दिन थिंग। तुम्हारी मेल रिव्यू करेंगे ज्वाला का एक दिन। सो इट्स ऑफ जीमेल रिजेक्ट रिव्यू रिजेक्ट रिजेक्ट, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। उनमें से वही बस वही कुछ होंगे जिनमें मुझे इंटरव्यूज देने का मौका मिला। ऑफ कोर्स मैंने इंटरव्यू में 15-20 कंपनीज दे रखी है इंटरव्यूज, तो उनमें से जाके एक तो कंपनी में सिलेक्ट हो, वैसा हुआ है। अप्लाई तो बहुत सारी जगह करा है। ऑफ कोर्स यार, मैं अगर टीयर 3 कॉलेज का ही बंदा हूँ, तुम सब उसी में से हो गए आई बिलीव। नहीं हो गए तो फिर तो अच्छी बात है, बट हो तो फिर यू हैव टू गो टू दिस स्ट्रगल, राइट। रगड़ना पड़ता है, मेहनत लगता है, टाइम लगता है। एग्जैक्टली। ये हाउ टू गेट लाइक रिसोर्सेज वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है आज के रिज्यूमे के ऊपर, तो इसके लिए अलग से कर लेंगे, मतलब और एक वेब डेवलपमेंट का पूरा मास्टर क्लास होगी, तो देखते हैं। आई डोंट थिंक ये रिज्यूमे काम आएंगे, आईटी कानपुर के हैं तो मे भी थोड़ा सा काम आ सकते हैं, क्यों, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है। नहीं, कोई काम का नहीं है। आईआईटी से करो, पाइथन कहीं से भी करो यार, यूट्यूब कहीं से से भी करो, करो फ्री में पढ़ो, यार, क्या स्किल्स फर्क करो पड़ता ना, अपने प्रोजेक्ट्स डालो ना, तुमने वहां सीखा है, सर्टिफिकेट क्या है। अभी मैं भी बांटूंगा, अभी देखो मैं अभी साइट बन रही है, राजब बना रहा है वो साइट मेरी, वो मतलब मेरे 2 जूनियर से बन के बना रहे हैं सर्टिफिकेट साइट। अभी मैं लॉन्च करता हूँ, परसों परसों सर्टिफिकेट बांटूंगा मैं। ले जा भाई सर्टिफिकेट में डीएसए बूट कैंप का, क्या होगा सर्टिफिकेट का, कुछ नहीं होगा। बता भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट नहीं कोई नहीं, कोई वैल्यू अभिनव, का। ये एक्चुअली ऑनलाइन में ना, ये लोग सबको सर्टिफिकेट की आदत हो गई है। फ्री के मतलब भाई सर्टिफिकेट क्या है बढ़ यार, जाते। क्या होगा सर्टिफिकेट, तुम बताओ। तुमने अगर अगर तुमने मेरा बूट कैंप देखा होगा ना, डीएसए बूट कैंप, उससे कुछ सीखे होगे 3 दिन, तो वो काम आने वाला है, सर्टिफिकेट नहीं काम आएगा। मतलब ठीक है, मतलब मेरा क्या, मेरा तो मार्केटिंग होगी सर्टिफिकेट बांटने से, मैं तो बोल रहा हूँ मेरी मार्केटिंग होगी भाई, लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, वो लोग शेयर करेंगे, मेरी मार्केटिंग होगी। ठीक है। या नेक्स्ट वन, C++ के लिए कौन चैनल, लव बब्बर और स्ट्राइवर, फ्री कोड कैंप, और सब बढ़िया है भाई, मेरे को तो सब अच्छे ही सब दिखते बढ़िया, हैं। जहां से हमने वहां से करो। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी, सब अपना कंटेंट अच्छा ही बेचते हैं यार, नॉर्मल सी बात है, सब अच्छा देते हैं। किसी को भी कम नहीं, खराब नहीं दे, कोई खराब देगा ही नहीं, क्योंकि सबको नॉर्मल ह्यूमन सब बढ़िया है, साइकोलॉजी है, सोचो। अब सब बढ़िया, जावा की सब बढ़िया। देखनी है तो उनकी बहुत बढ़िया है, कुणाल कुशवाहा की, उसका कंटेंट बहुत सही है। इस चैनल पे नाम। उसका कंटेंट कुणाल बहुत ने सही है, कुणाल ने मुझे अच्छा कुणाल लगा ने था। काफी अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है, मतलब डीएसए में अगर मैं बात करूँ जावा के ऊपर, कुणाल का कंटेंट काफी अच्छा है, ठीक है। कुणाल कुशवाहा, बस उसकी थोड़ी बातें इग्नोर कर देना, सीपी छोड़ने वाली, बाकी सब बढ़िया है बंदा। और मतलब बड़ा कंटेंट अच्छा है, C++ में बताया है, स्ट्राइवर ने दोनों लेके चला है, सब बढ़िया है। यार ये बात मुझे लोग कम से कम 7-8 बार मुझे, मैं सुन चुका हूँ ये बात, तो एटलीस्ट मेरी बात करा दो यार निशांत सर भैया से, तो कोई फायदा भी हो इस चीज का, और क्या ही फायदा है भाई। या इसको मैं आज पोस्ट, अच्छा गाइस, सो अगेन मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको आज के लिए अच्छी लगी हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर देना लिंक्डइन पे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, ये तो जरूरी डीएसए है। प्रैक्टिस करने अब भाई। निशन चार जैसा लगता है, उसको टैग भी कर देना भाई। हाँ, ये इसका 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 स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको सच में लगता है ऑल इन वन, तो जाके टैग करो यार लिंक्डइन में, मेरी बात कराओ उनसे यार, बात नहीं हो रही मेरी। मैंने उनको कब का मैसेज किया हुआ लिंक्डइन पे, बताओ भाई, मतलब वो बात लगेगी, उनके मेरे से 10 गुना फॉलोवर है लिंक्डइन में, बट ठीक है। तो डीएसए प्रैक्टिस कौन साइट, कोई भी कर लो, जीएफजी लीड कोड सब बढ़िया है, जीएफजी लीड कोड हैकर रैंक कहीं से भी कर लो, ऑल आर गुड। I'm from service department in electrical field for 3.5 years and switched my profile to data science. इसका तो मुझे नहीं पता, मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसका क्या कर सकते हैं। बट कह सकते हैं कि डेटा साइंस फील्ड में आना है तो यू शुड हैव सम
टू डू 3 प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट डेटा साइंस फील्ड वाला प्रोजेक्ट। और एक्सपीरियंस जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वाला ना वो भी काम आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस से काम नहीं आएगा, बट यू शुड, तुम्हें प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी फील्ड में जा रहे हो तुम्हें उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए। So in this way you एग्जैक्टली can make your resume effective, and either you can go from some small internships that may bring some experience in your resume that may get some more effective, okay, ठीक है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक दो लास्ट लास्ट क्वेश्चन फिर कंक्लूड करते हैं ना ज्वाला। हेलो भैया, वन मोर क्वेश्चन था कि along with DSA and development can I start my own YouTube channel? करो यार, सबको जो करना देखो, है करो। सब करो, सब करो, जहाँ इंटरेस्ट हो वो करो। मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था ना ज्वाला, या जो लोग मुझे पहले जानते हैं वो जानते हैं, आई वॉज अ न्यूबी ऑन कोड फोर्सेस। मैं न्यूबी था, मेरे से खुद से 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे कोड फोर्सेस के मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके। मतलब मैं सोचता हूँ भाई क्या चल रहा था ये जिंदगी में, मतलब मेरे खुद नहीं सॉल्व हो रहे, मैं दूसरे का वीडियो देख के और फिर वीडियो बनाता था। तो करो, लेकिन हाँ, एक चीज की एक वो भी होता है, टाइम देके भी करो कि भाई अभी क्या जरूरी है। अगर आपकी 6 महीने बाद इंटर्नशिप आ रही है, आप प्लेसमेंट सीजन आ रहा है, तो तुमको उसको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। वरुण, मैं मेरा रिज्यूमे तुमको मिल जाएगा यार, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे पब्लिक है, सब लोग देख सकते हो। मैंने बस उससे अपना नंबर हाइड कर दिया है, बाकी सब कुछ पब्लिक है। एंड प्लीज सेंड रिज्यूमे, तुम देख सकते हो वहां से। ओके, एनीथिंग मोर गाइस? आफ्टर 2-3 मिनट्स विल कंक्लूड ना, 1 घंटा होने वाला है। आई थिंक 57 मिनट्स आर डन। पूछो यार। पूछो जल्दी, डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं। एनीवन एल्स? बाकी जो सबके डाउट्स क्लियर हो गए ना? स्मृति, ऑल इन वन, ऋतुराज, साक्षी, हैप्पीनेस, तविसी, प्रिंस, देखो, डीएसए पढ़ने के लिए बेसिक्स क्या आना चाहिए, अश्व, तुम्हें सारे लूप्स पता होना चाहिए, या फॉर लूप, वाइल लूप, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। बस यू आर रेडी टू गो, है एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली। इससे डीएसए तुम्हारा गाइस, स्टार्ट होगा। और मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ अपनी साइट का। सो यू कैन सी गाइज, मैं शेयर करता हूँ। सो दिस इज events.crackdsa.com. So we organize amazing tech events just like this one. This was a very small master class for resume building. इससे और अच्छा बड़ा बड़ा करेंगे। अभी थोड़ा सा we are engaged with some other work. ज्वाला का भी हैकाथॉन है, मेरा भी काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। So I'm not giving that much time on this project, but yeah, the website is live and you will get amazing boot camps or master classes, and the plus point is everything is going to be free. सब कुछ फ्री होगा, तो इसको देख लो। events.crackdsa पे जाओ और जाके इसको लिंक्डइन पे भी फॉलो करो, नीचे जाके तुमको लिंक्डइन का लिंक मिल जाएगा। दिस इज द लिंक्डइन चैनल, वहां जाके भी इसे आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग चैनल, जहां पर आपको इस तरीके के बूट कैंप्स और मास्टर क्लासेस मिलेंगी। ओके, so Jwala, anything last conclusion for today's session? So guys, today's conclusion would be just try to work on your basic experience and skills, एंड जो स्किल रिलेवेंट है उसे ही रेज्यूमे में डालो, जो तुम्हें सच्ची में आती है उन्हें डालो, जो सच्ची में तुमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन्हें ही डालना, कहीं भी गिटअप से उठा के मत डाल देना क्योंकि पूछेगा रिक्रूटर, जब तुमने आंसर नहीं किया तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी उधर ही, सिंपल सी बात है ना। या तो तुम डाल रहे हो तो उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, है ना। So that would be a Exactly, thing, exactly. okay. So try to make a resume clean, concise and consistent very much, है ना। That's the point if you want to make a great resume। जैसे अभिनव का भी देखा, मेरा भी देखा, ऑलमोस्ट सिमिलर रेज्यूमे था। तो जरूरी नहीं है सबका, अगर ऐसा भी रेज्यूमे डालोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका सेम होगा तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो दैट्स द थिंग, जस्ट ट्राई टू मेक। और देखो ना, जितने भी लोग ने, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसका यूनिकनेस होना चाहिए, कुछ यूनिकनेस की जरूरत नहीं होती है ना, वैसा कुछ तो क्या ही Exactly. करोगे, रेज्यूमे का सिलेक्शन के बाद तो कुछ काम नहीं है ना। सो दैट्स द थिंग, सो ट्राई टू गो ऑन दीज पॉइंट्स इम्पोर्टेंटली एंड फेयर। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड ओवर हियर, ओके। अभिनव, तुम जो बोलना बोल दो। Yeah, sure, guys. So अभी हम लोग conclude करते हैं. We will be back with some another lives too on this channel. Before that, just wanted to have some more plannings. Before that live, this was a hurry up because we just wanted to have something to again include our audience that we were having. Okay, Java basics कहीं से भी कर लो, all in one में बोल रहा हूँ, बस करो, practice करो, कहीं से भी करो, everything is good. Okay, so great guys. मिलते हैं next video में. Till then, you can subscribe to this amazing channel and you can also follow me and Jwala on LinkedIn. We will share my LinkedIn profile on the नीचे comment box and let's meet in next. और मैं resume review के लिए एक form circulate कर दूंगा Jwala, तो ये लोग fill करके we will have some resume reviews next week ना.
कितना हो सकता है मतलब तुम देखेंगे, we'll talk about it. चलेगा. Okay then, okay then, bye guys. Have a good day. Thank you very much. Bye. And please take the screenshot of this and share it in your link. Thank you.